large section of generation is actually will not be with us maybe in 20 years down the line. So I think it's our responsibility to put something down in writing for the next generation to see how they felt, what they felt, and how things moved during those times. There is nobody from Vita. I wanted to say thanks to them for hosting this program. I'll do it as their officer is also around. So, I'm not a refugee. I think once again, I think they have come to this. Please. There are a lot of chairs that say that. As I was saying, Vita से कोई नहीं है, but he is from Vita. I'm just thinking. This is how the story started. But the books came up from the publisher. The first copy I wanted to contribute to the library, and it's just about 3 months back. I asked Madam, can I do that? She says, why not? So I kept one copy here. And after a few days, I came and asked, किसी ने पढ़ी किताब जैसे there are people who have read this and taken. And then she proposed, can I do a storytelling session and reading session? And we are here today. Thank you for hosting this program. They are the host. They have organized everything, including this wall, place, and this wall refreshment after the program. So thank you very much. Before I proceed further, only one thing I would like to say that 1947 we all remember for various reasons. Independence of India, formation of Pakistan, bloodshed, migration, division of India into 2 countries, 3 parts actually and 2 countries. But more importantly, for all of us, there was a silver lining of humanity, of friendship, of love and trust between people from different religions, which was actually not exposed to that extent. It had a place. Love never dies. Humanity never dies. So this story is about the humanity and the friendship. All the things I'm not going to go into. I'm not a historian. I have little knowledge about the background. I'll mention a few things about it. But this book is more about the humanity and friendship and determination. And that is why the title, I'm Not a Refugee. So, about 1.5 crore people were displaced, switched sides from one side of the line of Red Cliff line to another side, and about 40 lakh people were reported missing during those times. But that was the sad part. The good part is still there was a humanity alive, and that's what we are going to talk in this small session. So, this story is a story of 4 friends who lived in a place called Miawali. A small village is there called Bundia. You can't see from there, but that's the place these boys came from. And these boys were actually basically 2 Muslims, 1 Hindu and 1 Sikh. You are Jat Sikh, so Bali rakte the. So more, famously they were called as Chaukri. They were together since the age of 5 to 6 years. They were so thick friends. They had same school, same teacher, same class. In the evening, they would come back and play danda together, kite flying and going for a swim somewhere nearby. And when they grew up, they would end up having a session of rum together. Which I will come. You know about that? I'll come again. So. So basically, I would not describe their characters. I can't run through 220 pages of the book, but these few things are very important and very, important to my heart. Rashid was the son of a village headman, strong, well-built, leadership
good leadership qualities, and liked by everybody. Mansoor, on the other hand, had a humble background. He came from a small business family. They had a business of skimming of kettles outside the village, not respected too much. Then there was Ranjit. Ranjit was from a businessman family, large business. He had a lot of money in his pocket. And then Dwarka. Dwarka is the protagonist, the hero of this novel, because novel में picture में एक hero होता है, तो उसमें Dwarka is the hero. And he is the most educated of the lot among the four friends. Together, these four friends actually were so thick friends that when they were younger. So what would happen is, नमाज के दिन क्या होता था? रशीद और मंसूर नमाज पढ़ने जाते थे, द्वारका रंजीत बाहर बैठ जाते थे. इनके वो बाहर आते थे नमाज का, तो खीर खाते थे और जलेबी खाते थे. मंगलवार के दिन क्या होता था कि बाकी तीनों दोस्त बाहर बैठते थे. द्वारका अपने पेरेंट्स के साथ मंदिर में जाता हनुमान जी के, और वो बूंदी के लड्डू बाहर आके खाते थे सारे. और संडे के दिन तीनों बाहर बैठ जाते थे और रंजीत जाता था गुरुद्वारे में, और बाहर निकल के वो कड़ा प्रसाद खाता था. उनकी दोस्ती जो थी वो सिर्फ लड्डू, खीर, जलेबी और बिरयानी जो खीर में मिलती थी वहाँ तक थी. उनके लिए राम और रहीम जो था वो यही था, दूसरों की हेल्प करना, हेल्पिंग ईच अदर. कोई आपस में शरारत नहीं करनी. बहुत शरारती थे, बट दे वर नॉट लाइक ब्रो. So that was the kind of personality they had. Now we can move to the next. So as they grew older, the Chokri, the four of them still remained close friends and very well respected. Unfortunate event happened. This I'm talking about 1945, 2 years before the partition happened. So in 1945, मियाँवाली में जो पूर्णिया गांव है, there was a one respected money lender called Belu Ram. So Belu Ram's house was robbed by a Muslim bro, Ganju, and that team of gundas killed Belu Ram, his wife, and 2 young children, looted the entire family, and ran away. So it was a very ghastly accident, I would say, or experience for other villagers to know. So they were very angry. So villagers got together and said, let's go and go to the police station and let's talk to them. They are not nabbing this because he is a Muslim, and police chowkidar, Thana officer is also Muslim, and this is some kind of a communal story in this. So they, Hindus and Sikh of that area, marched towards the police chowki, and police chowki people thought they are going to overrun us. They started firing. As a result, 2 Hindus and 1 Sikh was killed. So in a span of 10 days, 4 from Ganju family, 3 more from the village, 7 people died. And this actually, upset the entire Hindu community more. So some Hindus from nearby places and all that in the night actually raided this Punia village. And I'm now coming to Rashid. Rashid's father was the village headman. His name was Firoz Khan. तो फिरोज खान सो रहा है अपने साथ, उसका कजन ब्रदर सो रहा है, रशीद सो रहा है, रात का टाइम है. अब आप इमेजिन करिए अगर आज से 75 साल पहले घर कैसे होते थे. कच्चे घर, कच्ची दीवारें, आप टाँग के आ सकते हो, दरवाजे इतने पक्के नहीं है, आप उसको ऐसे लगा करके खोल सकते हो. तो दैट काइंड ऑफ माहौल was. Just imagine गायें बनी हुई हैं उसी जगह पे बॉडी यार्ड के अंदर, और लोग बाहर सो रहे हैं और वहाँ भूसा भी पड़ा हुआ है. So about 60-70 people actually raided Firoz Khan's house because he said, you are the headman, you are not doing anything, could have Ganju. So in rage they killed Firoz Khan. They also killed Firoz Khan's brother, cousin brother. Rashid escaped and they lit the entire house, आग लगा दी. उसके बाद वो भीड़ सारी की सारी मस्जिद में जाती है, मौलवी को मार देती है. So 1945 में ये किस्सा होता है. Started with a robbery, which is a civil matter, ended up as a communal flare-up. So after that, that place never remained peaceful. Now these boys, about 28-29 years of age, and at that point of their career, where they cannot afford all this nonsense, they're very focused. They want to build their career, not get into some kind of a fight.
was part of Indian Muslim League and Dwarka wanted to become a congressman, blah blah blah. That's separate. But they never wanted this to happen. So this chapter, this is the storytelling part. There is small section I've kept for book reading because book reading एक अपने आप में interesting चीज होती है. So I would spend little for 5-6 minutes on reading one chapter, which is chapter number 3, Why Delhi, with Manmohan, my cousin, and again it is 1945. Before I start the book reading session, within about 5-6 minutes, we'll just read two stanzas and you will enjoy that. Let me take you to the history a bit. 1945 में हम बोलते हैं, 1947 में पार्टीशन में बोलते हैं उस दिन ना हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया. तो झगड़ा कब शुरू हुआ? झगड़ा तो कई सालों से था, हजारों साल से था, 400-800 साल से था, जो भी कह सकते हैं. बट ब्रिटिश के आने के बाद हम ये मानते हैं कि चलो वो शायद सुलझा हुआ था. तो व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स which were discussed in this section? अभी ये सेक्शन के अंदर 4 दोस्त हैं जो आपस में झगड़ा करेंगे, बात करेंगे, आर्ग्यू करेंगे और रिजॉल्व करेंगे कि अब क्या होना चाहिए. तो द्वारका ये बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं अपने साथ रंजीत को लेके जा रहा हूँ. हम दोनों दिल्ली जाके लॉ पढ़ेंगे और LLB करेंगे. हम पार्टीशन की फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में जाएंगे, हम खादी कुर्ता पहनेंगे, गांधीनगर के हम चेले हैं. और उधर दूसरे वो कहते हैं हम तो इंडियन मुस्लिम लीग के हम तो मुसलमान हैं और उस तरह का एक डिस्कनेक्ट है, लेकिन आपस में बात नहीं करते. They have never talked about Hindu Muslim ever in their life like this. It was a topic kept behind them. They had never discussed it before. So द्वारका रंजीत को तो बना लेता है और रशीद और मंसूर उसको ऑब्जेक्ट करते हैं इसका. द्वारका जो अपने आर्गुमेंट्स अब देने जा रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि 1985 में कांग्रेस फॉर्म हुई थी और 1885 में फर्स्ट टाइम कांग्रेस फॉर्म हुई थी एज ए सिविल सोसाइटी. उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट. I've collected this data from various sources to share with the audience. Not getting into detail, but just I'm trying to just underline 2 important events which happened. So 1892 में इलेक्शन होता है जिसके अंदर 25 काउंसिल मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फॉर द फ्रॉम एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू गवर्न इंडिया. उसमें से 25-20 लोग तो वो क्वीन के लोग अपॉइंट करते हैं और 5 वो कांग्रेस से पिकअप करते हैं. उसमें एक भी मुसलमान नहीं होता. आई एम सॉरी, मैं किसी के रिलीजन को हर्ट करने के विचार से कुछ नहीं बोल रहा हूँ और ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं. आई हैव totally unbiased about the religion part, so please don't take it otherwise when I'm talking about Muslim or Hindu or whatever. अब थोड़ा सा एक खटका होता है मुस्लिम लोगों को भी, हमारी आवाज कौन सुनेगा? अगर हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो हम भी तो एक कम्युनिटी है स्ट्रॉन्ग. और 1906 के अंदर वो इंडियन मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करते हैं. धीरे धीरे होता है सारा प्रोसेस को. और 1909 में ब्रिटिश मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफर कर देते हैं कि आपकी अलग से वोटिंग होगी, आपको अलग से सीटें दी जाएंगी, आप एक अलग से कम्युनिटी हो इन दी इलेक्शन सिस्टम. हमारे डेमोक्रेसी स्टार्ट हो चुकी थी. मतलब आप राजा वगैरह तो पीछे चले गए थे, आप अंग्रेज आ गए थे, उनकी पार्लियामेंट थी ऐसी, हमारी पार्लियामेंट भी होने जा रही थी, इलेक्शन होते थे. तो हिंदू महासभा बनी, उसके बाद 15 के अंदर फिर जलियांवाला बाग हुआ. उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने चलाई उसमें मुस्लिम्स ने कहते हैं कि पार्टिसिपेट नहीं किया अगेंस्ट ब्रिटिश, ऐसा भी सुनने में आया. फिर कुछ जो हार्ड लाइनर हिंदू थे वो कांग्रेस छोड़ करके RSS स्टार्ट कर दी इंडियन गवर्नमेंट. दैट वाज इन 1946. और ये सब कुछ चलता रहा. एक लक्ष्मी पूजन हुआ, उसके अंदर वो जब मॉस्क के पास से निकल रहा था, 1923 की बात है ये, तो उसमें अटैक हो गया. तो चलता रहा. और 1940 में फिर जिन्ना साहब ने कहा तो पाकिस्तान चाहिए. और 1946 में लास्ट के वायलेंस भी हुआ. फिर बाद में जो हुआ, इस बैकग्राउंड को माइंड में रखकर के द्वारका अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करता है टू हिज फ्रेंड्स के व्हाई यू शुड गो टू दिल्ली. दिस इज व्हाट मी एंड मनमोहन मलिक आर गोइंग टू डू अ बुक रीडिंग पार्ट ऑफ few important aspects. So if you अच्छा ये important है, good for मैंने ये नॉकआउट सेशन नीचे लिखा हुआ है. नॉकआउट सेशन मतलब ये और दोनों है और नॉकआउट हो गए. लिटरली इसका यही मतलब है.
तो एक बार क्या हुआ, ये चारों के चारों दोस्तों में झगड़ा हो गया इस बात को लेकर के कि क्रिकेट का अगर मैच आ रहे हैं तो द्वारका की गलती से आ रहे हैं कि संजीत की गलती से आ रहे हैं, या who was at fault. So everybody was blaming each other. So they were very angry and enraged about on each other. They were fighting literally कि because of you lost the districts आ गए वगैरह वगैरह. So they decided to buy a bottle of rum, go to a field, open the bottle and argue कि द्वारका तुमसे ये गलती हुई थी और रंजीत तुमने ये करा था और देखो मंसूर तुमने ऐसे किया और तुमने ऐसे किया. And by the time they finished the bottle, they were able to resolve the matter. होता उल्टा है कि हम पीते हैं और उसके बाद मारपीट करके ही कराते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मारपीट नहीं करते. So they resolved it, and by the time they could resolve this, Mansoor was knocked out. By the way, which rum it was? It was the army canteen rum. This is what my book says. It is mentioned in this book in detail the brand which they used and the place to get it. So now this knockout session became a kind of a culture for them, or a tool. Whenever they would have some kind of a serious thing to talk, they would do a knockout session. And today was the best time. And they said, let's do a knockout session at this. So what happened? I think we can take it from here on. No. So Tony, sorry, his nickname is Tony. Manmohan will be reading. There are four of us talking to each other. Since we are only two, so he's going to behave like Dwarka, the protagonist, the hero. And I will take the role of all, Ranjit, Mansoor, and Rashid. We will not be able to make out who's talking what. We'll try. Let's see how it works out. I'm sure you're going to like it. You know, I'm considering joining law and becoming an advocate. You know, all prominent leaders of Congress are from a law background. You name it. Gandhiji, Nehru, Jinnah, Patel, Gulabhai, Liaquat Ali, and many more. I think we should join Congress. Ranjit, but joining Congress would mean confrontation with Rashid and Mansoor. They are from Indian Muslim League. Ranjit, the country and Gandhiji need people like us who believe in coexistence of religions with love and affection. The way we live with Rashid and Mansoor without any ill feeling and acrimony. We'll all come back better equipped with knowledge. What do you mean we'll come back? Where are we going? I'm considering going to Delhi. Will you come with me? How can we go to Delhi? I have got a business. I have no plans to study. It's not safe here. We'll be unnecessary targets. Going to Delhi all the way. Why not go to Lahore? Lahore is also unsafe, my dear. Delhi, and that's final. Okay, friend. And then Rashid and Mansoor next in. So he convinces. You know, Dwarka convinces Ranjit कि भाई हमने जाके. Ranjit कहता ठीक है. Ranjit थोड़ा सा इसमें ना हल्का सा वेला सा attitude है इसका. Let me tell about one thing about Ranjit. Sorry, interrupting. तो रंजीत इज फैन ऑफ केएल साइकिल. वो केएल साइकिल गाने गाता होता है. उसका मानना है कि वो द्वारका के साथ दिल्ली में जाता हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा और सिंगर बन जाऊंगा. सो ही इज कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. सो रशीद एंड मंसूर केम टू हजारा, द प्लेस वेयर दे वर द्वारका वाज देन लिविंग, एंड कन्फ्रंटेड बोथ द्वारका एंड रंजीत अ वीक बिफोर देयर डिपार्चर. Why this sudden decision, Rashid asked? Running away from us because we are Muslims? You asked Ranjit to accompany you and not me. Why? Because both of you are Hindus and I am a Muslim. Just shut up, you nasty fellows. Then Dwarka leads them to his room and they start a knockout session. He opens a bottle and then they start carrying on the discussion further. So, you know, I'm paying to listen to this Muslim Hindu crap. And Delhi is one of the best universities. So what's the fuss about? Rashid again asked, why not Lahore? It is equally good because he was not aware. Ranjit had posed the same thing earlier. Mansoor, it appears that Benu's murder has rattled you. I am not running away. I am just going to study. Rashid says, are you scared of us? Now friends are talking as if they are now become, they are Hindu and Muslim, not friends.
So, उनका वो चीज़, are you scared of us? Why should I be scared? I'm looking for a better college and that's safe too. And by the way, do you know Muslim League is asking for a separate state for Muslims? And do you know what it means? If Muslim League has its way, I may have to adopt Islam if I was to live in Hazara or Miawali. Don't forget, one thing that held us safe together and hopeful was the rule of the law that British Raj enforced. I'm worried what happens after they are gone. Dwarka, you are going too far. No one can force you to convert. I'm here to protect you. So, Rashid offers, he says, don't worry. What happened to Belu can happen to anyone. This is just one odd case. Don't make an issue out of Belu Ram's case. It is just one case. British empowered the ordinary citizen. They brought democracy. Their system is working in so many countries. They are leaving us without any king. Our nascent democracy is fragile. The whole system is built by them may actually collapse. And finally, we don't know who will be our king. Nehru, Gandhi, Jinnah. They all are just lawyers with no experience. Too meek to govern like a king. I don't trust any of them. By now, Mansoor would not apply his mind beyond a point, he says. Dwarka, have you taken a contract to set entire India right? Forget about the rest of India, talk about us. So that's what Mansoor is coming. Is it wrong to think calmly and do what is critical for us? Rashid. Now Rashid tones down, said, but once you go to a capital city, why would you come back? Our dreams to build madrasas, schools, hospitals for poor would remain just a dream. What about them? I am not making excuses, not at all. There is no way we can be deconjoined. I will come back. But you know what? I see a pattern. There is an undeclared war between Hindus and Muslims. You are back to Hindu-Muslim agenda. Are Muslims to blame for whatever is happening? It is the looters and gangsters and squatters who are buying someone's property. They are lowly people. Let's not label them as Muslim or Hindu. Let's not say it's religion. It is the lowly people who are to be blamed for what is happening around. Ganju was a looter first and Muslim later. That's what his argument is. And just tauntingly he says to Dwarka, actually meek Hindus run away just like you. Do you really think Hindus are weak? History says so. Who am I to make such a statement? Hindus are meek and weak. They were never united under one ruler. They always have been led by someone. All the more reason I should run away. Rashid comes in and says, before today you had never talked about religion like this. Because it was a topic which is not to be discussed ever. So, you wrote some wonderful poetry on this topic. One thing, Dwarka was also a poet. Educated, but he was a poetic bent of mind. He used to write poetry in Urdu. You wrote some wonderful poetry on this topic. Do you remember it? Can you recite it for me? Of course I do. मंदिर से ना गरज हमको, ना मस्जिद से ताल्लुक, हम बहुत आखिर काबा वो बुतखाना नहीं है, हम बहरे सुकून मय का तजस्सुस नहीं करते, मिन्नते कशा साही नहीं पैमाना. Can you explain this? Well, it really just means that I have no expectations from temple, nor have I any relation with the mosque. Neither am a follower of Kaaba nor temples where I do the worship. So, Dwarka had been writing poems and this is what this podcast. Then Rashid asked, what is your fear? What changed your mind? Ultimately, they come down to a novel. It is a 30-page chapter, but I have summarized this more. This is what in this when you read it. So Finally, we are all in a bright age. We have a bright future. We have family responsibilities. I'm so confused. How should I show my family that everything will be all right? In these fluid times, we have to make careful choices. So,
this kind of discussion happened, and then they go to sleep after that, and next day morning they all get up, have a nice breakfast, which was very fun, very free, and they just forget what happened because this discussion lasted for about 7 hours in the night, and if you just summarize in 6 minutes. So this is how, when friends part like this, Dwarka had promotion in 1945, and they were scared. So they wanted to stop him from going from that place wherever to Delhi. So it is not 1947, the roots, the seeds were laid much earlier. And they finally agree and let Dwarka and Ranjit to go to Delhi. So then now Dwarka and Ranjit travel, those ज़माने में ऐसी ट्रेन होती थी कोयले वाली. The train journey, first time for them, such a long journey, and even in 1945, Dwarka has defined this as a secular bogie. So एक बोगी में एक मुस्लिम फैमिली है, एक सिख फैमिली है, कुछ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई शादी में जा रहा है, कोई बातें कर रहा है. So it was all normal. So Dwarka travels to Delhi in a train like this, which is called secular bogie, and he is visualizing. Now he very briefly, I'm not a historian, kind of a thing. Very briefly, a place called Miawali, a small town in West Punjab, the capital. अब आप जैसे हम जाते हैं, पहले जाते थे, अब तो नहीं, बॉम्बे भी है, वैसे ही लगता है. आज से 25 साल पहले जब दिल्ली से बॉम्बे जाते लगता है, बॉम्बे जाने हुआ जा रहा है. So उसके लिए था मैं दिल्ली जा रहा हूँ. तो दिल्ली was then a city, a fortress city. लाल किला था वहाँ पर, 5-7 गेट थे, अजमेरी गेट. अजमेर की तरफ है, if you know, I don't know, how many of you are aware? Ajmeri gate, the road goes to Ajmer. Lahori gate, the road goes to Lahore. Kashmiri gate, Kashmir goes to Kashmir. Delhi gate, the road goes to Old Delhi, Jahanabad, towards. So that's how these gates were named then. So Dwarka was visualizing all this. It was taking all the great just to add. And if you all know that 1931, the new Delhi was inaugurated, which British had built, a Viceroy's house. And interestingly, they named it New Delhi. Can anybody guess why they didn't name it after Queen Victoria or somebody, Queen Elizabeth or somebody? Why Delhi and New Delhi? My take is this: they had no interest left in India then. This is not something new we have created. Let's call it New Delhi. They could have named it wonderfully after the name of some British icon. But they just named it New Delhi. और एक नई सड़क है जो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली को कनेक्ट करती है. आजकल हम सब जानते हैं नई सड़क काफी क्राउडेड है. बट उस जमाने में पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली की रोड थी, नई सड़क आज भी है. सो नई सड़क. तो इस ट्रेन में वो लोग भी थे नई सड़क वाले जिन्होंने बताया ये किस्सा कि नई सड़क का नाम क्या है. सो ये पार्लियामेंट जब बनती थी 1931 में, तो दिल्ली का एक मॉल क्रिएट करने की कोशिश करी है मैंने इस बुक में काफी डिटेल में. और now Dwarka, without money in his pocket, because the trip was financed by Ranjit on a loan to fund his ticket and to fund his education. Dwarka was not from a rich family. He was educated, doing a job, and he had a passion to do law and become a freedom fighter. He had no money. So they landed up in Delhi. They had admission already in Delhi Law Faculty at that time, and they stayed in a place called Square Hall. And next day morning, 2 days after the admission, they went around looking for a part-time work. So मेरी घड़ी मतलब है by chance 6-5 नहीं अच्छा चल रही है 6-4. I'll be doing. आपको जल्दी तो नहीं है? हम 7:15 तक खत्म कर लेंगे इसको. Saturday है तो जल्दी नहीं है. ठीक है तो मैं आपसे राउंड पास. वो वीडियो भी. So अब मैं फिर असेंबली दे रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज. किसी छोटे शहर से, गांव से, उत्तराखंड के किसी गांव से या बिहार से या यूपी से, आजकल तो खैर सब दिल्ली पॉसिबल हो गया, आज से 20 साल पहले कोई जब आता था बाहर से बड़े शहर में नौकरी करने के लिए, तो उसकी क्या हालात होती है, जस्ट इमेजिन दैट. सो द्वारका एंड रंजीत हैव लैंडेड अप इन ए वेयर हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, taken an admission, but they had no money beyond 1 month to spend for the food and all that. So they had to find some job. So Dwarka and Ranjit were advised by their friend कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम स्कूल में जाओ और ट्यूशन ढूंढो. So he was a teacher.
before he started, he was doing so he goes to a school nearby, where all Mall Road के पास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है, जो कि अरावली रेंज जहाँ स्टार्ट होती है. अरावली रेंज स्टार्ट फ्रॉम दिमारपुर, I don't know how many of you are aware, and goes 600 miles up to Rajasthan, गुजरात. So उस अरावली रेंज के पास में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बड़ी सुंदर सी जगह पे. मैंने 50-70 साल पहले उस अरावली में अभी दिल का यहाँ घूमी है, उस जमाने में वहाँ पर शेर जी के भी घूमते हुए. सिविल लाइन्स थी वहाँ पर बड़ी सुंदर. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो ठहरे हुए हैं, और पास में सबसे जो नज़दीक जगह है वो तिमारपुर है. एक जगह तिमारपुर जो है, उस टाइम पर ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो एम्प्लॉइज थे, सीनियर एम्प्लॉइज बंगालीज मोस्टली, के बेंगलोर थे वो. और उसके अंदर एक स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, जो 8 या 10 तक था उस टाइम स्कूल ही था. तो वो वहाँ जाते हैं एंड पहुँच जाते हैं स्कूल के अंदर, द्वारका एंड रंजीत, एंड दे सीक द इंटरव्यू विद द प्रिंसिपल. तो जैसे वो घुसते हैं स्कूल में, मैं नरेट करूँगा, इंटरेस्टिंग सा है, मैंने इसको बनाया. जब वो घुसते हैं अंदर तो उनको लगता है कि ऑफिसर आ गया, क्योंकि वो तो सूटेड होते हैं, पढ़े लिखे टाइप के होते हैं और अच्छे कपड़े पहने होते हैं. उधर ऑफिसर आ गया, वो भाग के अंदर जाता है, बोलता है कि रेड हो गई एजुकेशन ऑफिस से, क्या बोला. सो बट वो जब अंदर जाते हैं तो उनको मालूम चलता है ये तो नौकरी ढूंढने के लिए आया. तो अल्टीमेटली दे रीच दी प्रिंसिपल रूम, एंड प्रिंसिपल भी कहता है आप तो सुना है कि कहते हैं हम तो पार्ट टाइम ट्यूशन मांगने के लिए आए. कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल कैन नॉट गेट यू ट्यूशन, इट इज अगेंस्ट लॉ. आई एम अंडर ब्रिटिश रूल. भाई मेरे ऊपर गोरे साहब बैठे हैं और मैं किसी को ट्यूशन दिलाऊंगा तो मैं ही इसको नहीं कर सकता हूँ, इलीगल. द्वारका इज डिटरमाइंड, क्योंकि मेरे को तो ट्यूशन चाहिए. शाम को मैं सवेरे लॉ पढ़ूंगा और शाम को ट्यूशन करूंगा, ऐसे खर्चा चलाऊंगा. वो कहता है सर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ सर, प्लीज आप देखिए तो सही मेरे सर्टिफिकेट सर, मेरे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, पोएट्री के, इसके उसके. एंड वो अपनी फाइल प्रिंसिपल के बना देते हैं. मिस्टर पोस्ट प्रिंसिपल होते हैं और वो एजेड होते हैं, अराउंड 50+ होते हैं, और द्वारका हो गए 28-29 साल में, रंजीत साहब में बैठा हुआ है. सो प्रिंसिपल स्टार्ट्स flipping the money. There are 2 more teachers sitting in the room. वो टीचर बैठे होते हैं वहाँ पे, प्रिंसिपल होता है और वो बैठे होते हैं. ऊंची दीवारें होती हैं, सब ऊंचा सा होता है, रोशनदान होते हैं, और पुराने ज़माने की ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बिल्डिंग होती है. प्रिंसिपल टीचर से पूछते हैं कि भाई वो जो चटर्जी जी हैं वो कहाँ हैं, वो मेरे से आए नहीं है. कहते वो बीमार है. तो कहते यार मैं तो थक गया हूँ, उनकी क्लासेस लेते रहते हैं इंग्लिश, वो कब आएंगे, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, ये मई जून के आसपास की बात है, एग्जाम आने वाले होते हैं उस टाइम. तो आफ्टर स्टडीइंग दी फाइल ही टर्न्स टू द्वारका एंड सेज कि आप जॉब करोगे. तो मैं जॉब कैसे कर सकता हूँ, मैं तो स्टूडेंट, मुझे लॉ पढ़ना है, मुझे वकील बनना है, मेरे को तो मीडिया मूवमेंट में जाना है, मैं जॉब नहीं कर सकता, मुझे पार्ट टाइम ट्यूशन चाहिए. प्रिंसिपल सेज मैं आपको जॉब दे सकता हूँ, ट्यूशन नहीं दे सकता. मैं आपको टेम्परेरी जॉब दे सकता हूँ और अच्छी तनख्वाह दूंगा, 75 रुपीज़ पर मंथ. तो 75 रुपीज़ in those days 1940 was a fortune. द्वारका से नहीं, मैं तो बहुत द्वारका है कि वहाँ से उठ के आ जाते हैं. बाहर आ जाते हैं तो एक टीचर को पीछे भेजते हैं, प्रिंसिपल को बुला के लाते हैं, इनको बुला के लौट दूँगा वापस. तो कहते हैं आपको दोबारा बुला रहे हैं, इधर जाओ. कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है. प्रिंसिपल because he is mature, he has experience, says do one thing, you take the law in the evening, migrate करा लो. सुबह टीचर बन जाओ और शाम को लॉ पढ़ लें. वही फैकल्टी है, वही यूनिवर्सिटी है, वही टीचर होते हैं, वही एग्जाम होते हैं, वही डिग्री होती है. तो ये द्वारका तो सोच ही नहीं सकता था ऐसा. सो ही एग्रीड एंड ही गेट्स अ टेम्परेरी टीचर जॉब ऑफ 75 रुपीज a month in their school, and that takes care of all his expenses and everything, and they happily start rolling on. 6 महीने निकलते हैं, एक दिन खबर आती है. एक दिन खबर आती है, ये जो टीचर उनको लेने के लिए गया था उनका नाम हरीश चंद्र था. उनको वो शॉर्ट फॉर्म में पंडित जी, मतलब तिलक लगाते थे, जनेऊ पहनते थे, तो उनको पंडित जी बोलते थे. शॉर्ट पंडित जी क्या है, अजब बोलते हैं पंडित. That पंडित जी was earlier to द्वारका और Iris. Why I'm explaining about पंडित जी, because जैसे मंसूर और वो रशीद वहाँ के दोस्त थे, पंडित जी became द्वारका's friend for life after that day on. तो
पंडित जी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग द प्रिंसिपल कि इसको जॉब दे दो, अच्छा लड़का है, ब्राइट है, पढ़ा लिखा है, फिट हो जाएगा। 6-8 महीने के बाद पंडित जी सडनली आते हैं, उनके घर वाले बताते हैं कि प्रिंसिपल की डेथ हो गई। सो मिस्टर बोस डाइड ऑफ एन हार्ट अटैक एंड देन द्वारका was called by the department and given the post of the principal of the same school in replacement of Mr. Bose. So 75 rupees से वो 225 रुपए की तनख्वाह में द्वारका becomes the headmaster of that school in a span of 6 months after landing up there. Just a small story is what to create. And इतना बड़ा उसका एक मकान मिल जाता है, जो मकान पीछे दिख रहा है आपको उस तरह का एक बड़ा सा 1500 कमरे होते हैं, उसका ह्यूज, and he becomes the headmaster. थोड़ी सी द्वारका की फैमिली में क्विकली बताऊंगा, एक इंस्टेंस बताऊंगा, बाकी आगे चलेंगे। ये द्वारका की फैमिली के अंदर द्वारका की ग्रेट 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 ग्रैंडफादर लालचंद, 1 2 3 ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, तो बड़े वो 6 फुट लंबे ऊंचे तक रहे थे, द्वारका तो इतने लंबे नहीं थे। तो एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर वाज पासिंग थ्रू देयर विलेज एंड ऑन अ हॉर्स विद लॉट ऑफ पीपल। द हॉर्स जो था वो बेकाबू था, he loses control and वो अपने दोनों पैरों में से खड़ा हो जाता है। And British officer is really scared. He keeps following him, लेकिन वो रुकता नहीं है। He's scared. तो द्वारका जो है उसको पकड़ता है, द्वारका सॉरी लालचंद जो है वो घोड़े को ऐसे पकड़ता है और एक थप्पड़ मारता है घोड़े हाथ से और घोड़ा मर जाता है। ब्रिटिश ऑफिसर बच जाता है, घोड़ा डाइज and British officer is very happy and he gives a village to Lalchand, which is Kudia. So Kudia village was gifted to Lalchand many years ago, and so they started living there. So that's the family history. क्योंकि द्वारका अपनी दादी से धंधा करना नहीं। द्वारका के 2 बड़े ब्रदर हैं, 2 डॉक्टर हैं, द्वारका हेडमास्टर बन चुका है। यंगर ब्रदर इज स्टडीइंग लॉ इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, देन मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उनके एक छोटे भाई हैं जो कि बड़े पढ़े लिखे हैं, IAS ऑफिसर बनने की पूरी उम्मीद है, जिनका कि बेटा ये मेरे साथ बैठा है। So this is how the family story चले। Few critical moments I'll just touch up। 1945 से 1946 में आ गए हैं। कांता द्वारका's wife comes to Delhi because he's got a job, he's got a house। और 1946 मार्च में एक लार्ज स्केल वायलेंस स्टार्ट हो जाता है बिकॉज सम इलेक्शंस वर लॉस्ट बाय समबडी। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, आप किताब पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा उसमें डिटेल सारा। और उस वायलेंस में वो सब जो हमने सुना है पार्टीशन में क्या हुआ था वो सब कुछ होता है। लोग कुएं में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ब्लड बाथ होता है। आई एम नॉट गेटिंग यू दोस डिटेल्स बिकॉज नॉट AI। और फिर सारी फैमिली जो है वहाँ से कहती है अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, अब काफी वायलेंस हो गया। तो द्वारका उनको बुलाता है, वो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं लेकिन वो खरीद ही नहीं रहा। अब ये मानिए कि मेरे को पता चल जाए कि मेरा पड़ोसी जो है वो छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी खरीदूंगा या इंतजार करूँगा उसके जाने की कि जाएगा तो मैं कब्जा कर दूंगा उसको। तो लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज वर नॉट कुड नॉट बी सोल्ड बिकॉज द नेबर हैड एन आई ऑन द प्रॉपर्टी बिकॉज ये तो जाएगा छोड़कर। So they could not sell properties and recover money in those turbulent times। अम्मी जी की द्वारका की मदद थी, वो जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी क्योंकि रुक ना जाए रास्ते में कोई पकड़ ना ले, तो उन्होंने कुछ ज्वेलरी को वापस तो आया जब भी सेटल हो जाएगा 7-2 साल में, वो ज्वेलरी को किचन की दीवार में, गोबर की दीवार होती है उस जमाने में, दबा के अपना लिया। अब जो द्वारका है, he is the principal, he has got a huge house, the problem has started, refugee camps लगने शुरू हो चुके हैं हर जगह। He gets a permission to set up a refugee camp in his school, which has a large hockey ground, वहाँ टेंट लग जाते हैं और तकरीबन कोई 20-21 फैमिलीज सारी इसका ट्रेवल करके आती हैं अदर जान में कुछ वो सब आ जाते हैं। द्वारका is responsible to take care of about 100 odd members and 21 odd families for their welfare। एंड सब अभी तक पार्टीशन हुआ नहीं है, हम सारी अभी हम 1946-47 में घूम रहे हैं और ये सब चल रहा होता है। और वो सब एक क्लिनिक स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों भाई डॉक्टर होते हैं, वही क्लिनिक स्टार्ट कर लेते हैं मेंटल लोगों को एक नहीं होती उसको एड्रेस करने के लिए। और एक बड़ा रूम था वहाँ पे हम गुजरा या बैठक, गुजरा बोलते हैं इसको उर्दू में
शब्द को या बैठक बोलते हैं, इसके अंदर हम दिन में गद्दे लगा लेते हैं, शाम को इससे बैठ जाते हैं, ये बैठक की तरह, और सारे एल्डर्स बैठ जाते हैं to talk about the strategies for surviving, how to survive now in the situation we have all come, leaving our properties, money behind, what to do now. So there used to be every evening some kind of communication would happen. एक मिनट ऑफिसर, इस सब दौरान के अंदर पंडित जी जो थे, जो उनके दोस्त बने थे, he is the man for it. पंडित जी शुद्ध ब्राह्मण, जिन्हें वो पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, मीट की दुकान के सामने ऐसे करके निकलते हैं. द्वारका जो है तो वो भी हिंदू, लेकिन वो उस माहौल में रहा जहाँ पर वो रम तो पीता ही है, चौकड़ी में बैठ करके मीट मुर्गा भी खा लेता है, सिगरेट भी पी लेता है. तो वो है हिंदू, लेकिन नहीं, वो इस तरह से हिंदू नहीं है जैसे पंडित जी है. तो द्वारका जी कहते हैं हमारे वहाँ तो जब पूजा का ही मतलब होता था कि दिवाली अपने रामलीला बताई, रामलीला कर ली,